Hello, everyone. Hello to all of you, and a very good afternoon. Welcome to the session. Can you please let me know if I'm properly audible and visible? You can let me know in the chat. Good afternoon. Good afternoon. All good to go? Okay, so welcome to the session. Those who are watching me for the first time, I am Niharika John Mehra, and I have been teaching English for more than 10 years now. Here we are going to talk about in this session a very interesting topic of essay. Okay, the topic itself is essay, and of course, we will discuss an essay. So, jaldi se you like and share the session. Also, subscribe the channel if you are new here. We are going to start in a minute. I'll take you through some really important points on how you should be doing essay writing, what kind of practice you should be doing, and a right way to do it. I know you may think it's just an essay. What's so important? Important is that you have to beat your competitors and you need to take the selection. है ना? For that, you have to do some things which are extra mile. आपको थोड़ा और ज़्यादा extra mile काम करना पड़ेगा. Something different, systematic, more systematic. So we are just gonna wait for more learners to join. Maybe let's wait for another minute and then we will start. By that time, if you can tell me, have you ever done essay in essay writing in any of the exams? Any of you, any experience in essay writing for a competitive exam in a competitive exam? Okay. Try and understand this thing. Okay, when we talk about descriptive, so this is your phase 2 paper 1 where descriptive English is asked. Okay, the first thing, it is typing based. Okay, typing based. I want to start with this thing, this clarity, that you need to make sure you are good at this before any other skill, which of course I'm going to talk about in some time. Yes, in IBPS PO. Okay. Oh wow, you have good experience. ठीक है. So typing based essays are usually little different from how we practice in our notebook, because you have to have an additional skill of not making any typing error, right? So there are two things needed to be taken care of. Errors. Okay, so actually I should write no errors. Okay, and speed. I have seen many students, they are doing great when I ask them to write an essay on pen paper, using pen paper, and then when the same thing is to be replicated on a laptop or a desktop, or let's say for that matter, any system, they are unable to do. So speed, because you have time limit, word limit is to be matched in the given time. This is something you have to do. Plus typing errors. Typing errors happen because all of us, I bet. Okay? Fine, Ajay. We will make sure that you do better and attend regular classes. So getting back, we are not used to using correct punctuation, using uppercase, capital नहीं करते हम जहाँ करना होता है, because we are texting on Instagram, Facebook, WhatsApp and what not all. So now the habit has become that we use three dots instead of using one full stop. This is at least my habit. When I text my friends, I use this kind of thing. I hardly use capital. I shorten the spelling, of course. Instead of saying you, I say you. Instead of saying because, I say because. I write because, okay? This has become a texting habit which is convenient at the time of texting, but this is actually a hazard for many of you.
Trust me, I have checked essays. So my USP, my expertise is checking descriptive writing of my students. I like to give them personal feedback, individual feedback. तो क्या होता है ना कि ये जो हैबिट है दैट होल्ड्स अस बैक here. If we are not making any correction, okay, you have to stop making this mistake. So first takeaway from this lesson today is you need to start typing using full forms, correct spellings, okay, sentence ka structure. And in case you're talking in Hindi with your friends, if the receiver is able to understand English, please start writing in English. This is a habit building thing right now what I'm talking about. Okay, technicality of essays पे तो आते हैं अभी. So what you're gonna do is you're gonna use the same pattern in your day-to-day typing, texting with your friends and family. Okay, I hope this much is clear to all of you. Now, in this descriptive, you are asked essay which can vary from 200 to 300 words. Okay, so you need to make sure that a relevant content is in your mind and it is at least something substantial that could cover this many words. Okay, for this, for content, the best thing is that you read. I'll write it in capital. I hope you are reading because it's of course for other purposes also. But if you're not, please start reading editorial. It is going to help you a lot. आपको ना learn नहीं करना है. I'll show you one essay towards the end of the session. You don't have to learn the whole editorial or mug it up. Just read it. Your subconscious mind will retain. And reading is not just for the content building, but also understanding the writing style. That means how do we express a point. You can see editorials are really good source where editors they specially frame those sentences to convey a point. एक पॉइंट एक आइडिया बताने के लिए बहुत ही अच्छे क्लैरिटी के साथ में अपना पॉइंट रखा जाता है, पोलाइटली बोला जाता है इवन इफ इट इज अ नेगेटिव थिंग. तो वो स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, तरीका जो है मैच्योर राइटिंग का, कंटेंट है, दैट ऑल विल कम फ्रॉम रीडिंग. सो दिस इज द सेकंड थिंग. फर्स्ट थिंग इज द टाइपिंग थिंग विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. सेकंड इज रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो. If you find yourself out of content every time you sit writing or practicing an essay, then आपको reading और बढ़ानी है. Okay, and definitely you will have content through this in your mind. Now I'm going to take you through how an essay is to be written. Okay, like what are the points you need to take in consideration. The first thing is understand the topic. Okay, you are often given some options. Now listen to me very carefully. आपके पास में options होते हैं 2 to 3 options. You choose, you select one topic and उसके ऊपर आप लिखते हो. Sometimes a fancy, good looking, attractive topic may not be a topic for you. हो सकता है वो आपको बड़ा फैंसी सा लग रहा हो. यू थिंक अरे इसके ऊपर लिखेंगे यू नो इट विल मे बी अट्रैक्ट मोर स्कोर. नो, टॉपिक सिलेक्शन इज टू बी डन बेस्ड ऑन व्हाट यू नो द बेस्ट. तो आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो, आप जिसमें टॉपिक को समझ पा रहे हो प्रॉपरली, यू हैव टू चूज दैट टॉपिक. टॉपिक भी क्या बोल रहा है? इस टॉपिक आस्किंग अबाउट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस? Is it talking about future of India, not present and past? So every single word, 5 से 7 words से 10 words का अगर topic है, you have to focus. Don't take it lightly. People they underestimate this first step and that's why later on they face difficulty. So आराम से समझो topic को, what is asked, because this will help you in planning and keeping your essay to the point. And then you start writing. You have to plan the structure. So between these two, understanding the topic, planning के लिए आपको 2 minutes रखने हैं. Okay, 2 minutes क्यों रखने हैं?
यू कुड बी वेरी एक्साइटेड, चलो ये तो मुझको आता है, जल्दी से टाइप करना शुरू कर देते हैं। नो, रुको रुको, हैव सम पेशेंस। प्लानिंग अगर यहाँ पे कर ली इस पॉइंट पे, देन योर ऑल द पार्ट्स लेटर ऑन विल बी ऑन द ट्रैक। अगर प्लानिंग बाद में करी, इंट्रोडक्शन लिख दिया एक्साइटेड होके, बट इन बिटवीन यू आर प्लानिंग नाउ व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, then there are high chances that you will just be distracted from the topic and आप off track चले जाते हो। We don't want that. So planning, of course, planning किसी घर को बनाने के पहले करते हैं ना, या फिर किचन और हॉल बना लिया and then we are planning अच्छा अब और कहाँ बनाए। So it's a logical thing to do. Plan the structure and then start writing. You start with introduction, okay, where you define key terms, जो आपके topic की terms है, set the context. That means, are you going to write in favor? You are going to talk about the topic in which tone. You define it in very general words. A general introduction, ऊपर ऊपर का superficial things. That's what we do here. It's a brief, okay. So in the introduction, which is the first paragraph of your essay, बहुत बड़ा भी नहीं होता है, ये छोटा होता है, आपको डेफिनेशन देनी है, और इफ देर इज एन इवेंट यू वांट टू टॉक अबाउट, कुछ हुआ था वो बताना है। इट शुड बी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देन कम्स द मेन बॉडी ऑफ एसे। तो प्लानिंग के टाइम में यू हैव टू डिसाइड द पॉइंट्स दैट यू वांट टू राइट। 2 to 3 points for 200 to 300 words is enough, okay. चलो, टेल मी, एंड बिफोर आई टेक यू अहेड, इस पॉइंट से आगे जाने से पहले टेल मी, अगर मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बट आप लोग मुझे बताना इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे आप। डिजिटल इंडिया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए what are the pointers, okay. I don't want you to write essay, I just want to know कि इसके बारे में क्या दिमाग में आ रहा है, क्या मेन बॉडी में आर्ग्यूमेंट्स आप लिखना चाहोगे। इट इज अ सुपर ब्रॉड टॉपिक विच आई हैव गिवन, मैंने स्पेसिफाई भी नहीं किया, 2 ही शब्द है, डिजिटल इंडिया, बताओ। नो वन, नो पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक। इतना डिजिटल खुद होने के बाद में यू पीपल हैव बीन यूजिंग एवरीथिंग डिजिटली। तो टेल मी, डिजिटल इंडिया के ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके, क्या सोच, तो कौन सा आइडिया लिखना चाहोगे। देन आई विल टेक यू अहेड। We can talk about the ease of it, right? How it has increased our scope of spending and purchasing. Connectivity, it has given us more opportunity to connect. तो डिजिटल इंडिया जैसे टॉपिक पर you can have n number of points, you can have 10 plus points that can pop quickly in your mind, है ना। हो सकता है कि आपको अपने डिजिटल इंडिया देखा बहुत सारे पॉइंट माइंड में आ गए आपके। यू हैव टू बी सिलेक्टिव, ओके, बिकॉज इन योर ऐसे आप ऐसे लिस्ट के समान बहुत सारे पॉइंट्स नहीं डाल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स हियर, ओके, सुपर इंपॉर्टेंट थिंग। डिजिटल इंडिया इज सच एन ईजी टॉपिक, उसके लिए आपके पास बहुत सारे बातें होगी बताने के लिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वे एवरीथिंग इन जस्ट 2 to 300 वर्ड्स, है ना। तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, एंड दिस सिलेक्शन इज व्हाट यू हैव टू डू एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के टाइम पर आप ये सिलेक्शन करोगे, ओके। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक 2 minutes हियर एंड you decide what are the things you want to include, and they should not be many.
बिकॉज हर एक पॉइंट को, हर एक आर्ग्यूमेंट को, हर एक आइडिया को यू हैव टू एक्सप्लेन एज वेल. So if you are taking 3 points to write in your main body, you have to write at least three lines for each point. Okay, that's how you frame and design your essay. Include examples. आप यहाँ पे data, examples, etc. यूज कर सकते हो मेन बॉडी में. Whatever the challenges, the solution of it है वो आप इसमें डिस्कस करते हो किसी भी टॉपिक का. Then you come to the conclusion part. Now conclusion is something where you make sure कि आपका जो टॉपिक है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा हो. सो वही टॉपिक जो आपको दिया गया है, इन सम अदर वर्ड्स आपको कंक्लूजन में रिफ्लेक्ट करवाना होता है. बिकॉज नाउ यू आर टाइंग अप द एसे. अब आप ऐसे को क्लोज कर रहे हो, तो आप एक्सप्लेनेशन अच्छा भारी यहाँ पर कर दिया मेन बॉडी में, but now in the conclusion you're going to summarize and it should end on a positive note. Very important. If the topic is negative, करप्शन हो गया, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्रीन हाउस कुछ गैसेस एंड ऑल, ऐसा कुछ क्लाइमेट रिलेटेड आ गया आपको, दैट इज अफेक्टिंग इकोनॉमी. ओके, बिकॉज एनपीएस का पेपर है, थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कनेक्टेड टू इकोनॉमी एंड फिनेंस. तो आपको करना क्या है, बुरी कंडीशन में भी there is a ray of hope. So end with a forward looking statement or a positive note. Okay, तो ये आपका conclusion होना चाहिए. There are 3 other points which are super important. Okay, and you have to keep it relevant. Okay, I have a funny question now. How many of you in your school days have written answers and maybe essays where you have just written a story in between of your answer, in between of your essay? करा है कभी ऐसा? स्कूल डेज में करते थे हम. इन अ क्वेश्चन जिसका आंसर प्रॉपरली नहीं आता है, इन बिटवीन यू वुड जस्ट राइट सम अदर स्टोरी, समथिंग एल्स. एक आधी बार करा होगा बहुत लोगों ने. आई नो दिस थिंग. You cannot do it here. This is your different level exam. तो प्लीज आपके पॉइंट्स रेलेवेंट रखना है. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ओके, इफ आपको पूछा जाता है क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो इन इंडिया और फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया, ठीक है, लेट्स से आपको ऐसा कुछ टॉपिक आता है, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया, ठीक है. सो दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल इज इन इंडिया, मतलब आपको इंडिया के बारे में लिखना है, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो. सो यू विल स्टार्ट विद प्रेजेंट एंड योर फोकस इज गोइंग टू बी फ्यूचर में क्या हो सकता है. ओके, not what happened in past, how people they mined bitcoins and they thought it would not work, but then it boomed and now they are maybe millionaires. वो सब बातें नहीं करनी है. This is called keeping it irrelevant. Relevancy is you see the topic is future, तो आप present में बताओ और future scope के ऊपर बात करो. Crypto in India, that means you have to talk about हमारे यहाँ के रूल्स, what they allow, what they don't allow, what is recognized, what is not recognized, and all those things. So you have to keep your essay relevant to the topic at every point, in the introduction, in the main body, in the conclusion as well. You have to be concise and clear. This is point for especially those people who are weak in grammar and maybe they find it difficult to frame sentences. Sometimes मैंने चेक करे स्टूडेंट्स के ऐसे, they like to use many connectors and all, and then the meaning is distorted because they are using them but incorrectly. तो clarity is something जिसके ऊपर अलग से ही मार्क्स है. जितना क्लियर ऐसे हो उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा. At the same time you have to make sure that it is quite lucid. पढ़ने के बाद एक बार में समझ में आना चाहिए. There should be no confusion. There should be no requirement of reading the statement, going back to the beginning and reading it again. Include data and facts, which you already know, so I'm not going to stress on that. Okay? Things that you will always keep in your mind. Grammar super important. नहीं आती है तो revise कर लो, because of course you don't have that much of time as of now. But that you do a full-fledged grammar course, but नहीं आती है तो करेक्ट करना अपने आप को शुरू कर दो. एक क्रैश कोर्स या फिर आपके पास में अगर नोट्स हो तो रिवाइज कर लो. स्पेलिंग्स,
How do you get better at this? This is whenever you are reading, please pay extra attention to difficult words. That's it. आपकी spelling सही होना चाहिए. Tone of the essay. हम यूजुअली आई एंड वी यूज नहीं करते हैं essays में. ओके, वी यूज अ प्रॉपर सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है उसका नाम यूज करते हैं. इफ देयर इज समथिंग, लेट्स से द आरबीआई हैज इशूड समथिंग न्यू, तो वो सब्जेक्ट होगा. वी बिलीव, आई थिंक, इन माई ओपिनियन, ये वाले वर्ड्स हम नहीं यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन में नहीं डालते. वर्ड लिमिट इज टू बी टेकन केयर ऑफ नाउ दीज डेज. एक वर्ड लिमिट सेट करने का आता है, तो अगर वर्ड लिमिट 300 है, यू मे नॉट गेट दिस चांस टू क्रॉस दिस मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट कीप 250 वर्ड्स. 300 वर्ड्स है तो 280 290 पे तो आ ही जाना है कैसे भी करके. And time limit, you have to practice a lot so that in the given time you are able to finish your essay. It is very, very important. Okay. When I talk about grammar, you have to make sure at least your subject verb agreement is correct. Okay. You have to make sure that tenses in which you are writing your essay is correct, because facts are written in simple present tense. मैक्सिमम ऑफ योर ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलेगा. ओके, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो कि थिंग हो चुकी है बट उसका इम्पैक्ट आज भी है, उसको बताता है. देन अनदर पॉपुलर टेंस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम फ्यूचर वाली बातें बोलते हैं इफ यू आर श्योर ऑफ इट. You use a lot of modal verbs like can, maybe, might, so that आप एक possibility को बताते हो. Use good adjectives to describe your nouns. ये कुछ important चीज़ें हैं. Prepositions तो usually सब सही use करते हैं, जिसमें ज़्यादा problem नहीं होती है, but you should know your grammar. Punctuation marks. After a comma, you need to leave a space. And then आप यहाँ पे लिखना शुरू करते हो. After a full stop, not before, okay? After a comma and a full stop, space, and then you start writing something, okay? So ये आपको पता होना चाहिए. Where apostrophe is to be used, you should know. Where आप किसी का sentence अगर quote कर रहे हो, किसी का statement quote कर रहे हो, which you should try not to do a lot, okay? In that case, you should know inverted commas कहाँ use करने हैं. We are going to take all these things while we practice in a descriptive course classes. So check out the description box for more details, because I will be taking regular classes and there will be live review of your essays. That means I'm going to check your essays in the live class. I'll give you my feedback, which is going to be a personal feedback for each one of you जो कि class में आते हैं. Maybe somebody is lacking in the grammar portion, other person is lacking in the content portion, किसी को बिल्कुल भी शायद नहीं आ रहा है. तो हर एक का जो I cannot give you a general feedback. Feedback is very much tailored to what you need to improve in. तो वो अगर चाहते हो, है ना, इमेजिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपका लिखा ऐसे स्पेसिफिकली चेक हो रहा है और आपको कहाँ सुधारना है वो पता चल रहा है. सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन अ लाइव क्लासेस. ओके, तो उसकी डिटेल्स आप टीम से ले सकते हो. सो ये पंक्चुएशन मार्क्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उनका बहुत बहुत ध्यान रखना होता है. One thing I want to talk about is use of idioms. Now please listen to me very carefully. Idioms, muhavare or proverbs, it's not mandatory that you use them. ऐसा नहीं है कि आप उनको यूज अगर नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएगा. बट इफ यू आर यूज करेक्ट ईडियम इफ एप्लीकेबल. नहीं आता तो मत करो, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं उस पे से. ओके, so apart from these are just top 4 things. There are more topics. तो अब आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डोमेन्स प्रिपेयर करोगे, मतलब कि आप ब्रॉड कैटेगरी
जो है वो प्रिपेयर करोगे, राइट? In the exam, you could be asked something specific. Growth of technology in India, impact of technology in India, startups and technology. It could be anything, but it is revolving around technology. Economic and social development, the topmost point. Digital India, as I said, sustainable development, women empowerment, okay, education, and how financial literacy is a hot topic. तो ये सारी चीजें, क्लाइमेट चेंज इज अ हॉट टॉपिक, आपको किसी भी एंगल से पूछ सकता है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग ब्रॉड कैटेगरी, फिर आपको कुछ भी वो पूछ ले अराउंड दैट ब्रॉड कैटेगरी, आपको वो बनने लग जाता है। So that's the thing. These are some of the important domains. There's 4 of them I have mentioned here, but there are more जो कि मैं आपसे क्लास में डिस्कस करूंगी। Now I have an essay for you all. I want you to take 2 minutes to read. ये फर्स्ट हाफ है, 2 हाफ में है ऐसे। मैंने ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से रखा है so that you people get to read properly. Please start reading and then I'll tell you how it is framed, okay? Give it a quick read and then I'll explain. Okay. India's renewable energy future. So my important points to be considered when I start thinking on मैं कैसे लिखूंगी ये ऐसे, it's going to be India. It should be about India. It should be the renewable energy we have and the future scope of it. Means I'm going to talk about what is presently there, and the second thing is to be how we can get more benefit out of it. So introduction is from this part to this part. Now important point to be noted, we write essays in paragraph form, okay? We don't use 1 2 3 points, okay? We don't use A B C, we don't do like that. So let's start. क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी टर्म आपको लगता है अगर समझाना है तो समझाओ, बट द टॉपिक इज फ्यूचर, so let's start with that. The scope of energy in India looks promising. The future is bright as the country is planning to expand use of renewable energy and more sustainable options. Due to increasing consciousness about climate change, reliance on fossil fuels, etc., the renewable energy has come up with one of the cornerstones of the Indian energy policy. ये है just a brief of future of renewable energy in India, not global, okay? So this is how I have started. You can define and start whatever suits you well, but it should be in the same tone. देन हम मेन बॉडी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे एंड हो रहा है, पहले फर्स्ट हाफ देख लेते हैं. इंडिया हैज कमिटेड टू स्पेसिफिक टारगेट्स. नाउ दिस इज द डेटा दैट आई नो. आप और भी कुछ और इंक्लूड करना चाहते हो आप कर सकते हो. So India has committed to the target of this of renewable energy capacity by 2030, of which the stress is on solar power. Solar power जो है, wind power and bioenergy are the top 3 in the list as of now. If you know then mention, क्योंकि renewable energy में कौन कौन है उनका नाम बताओगे तो main body में you explain that. The country is now world's 3rd largest producer of renewable energy. Again, fact है, if you are reading regularly you know this fact. Thanks to high levels of solar and wind energy investment,
People are getting aware now. They people are investing in such modes of energy. Huge potential of solar energy due to availability of sunlight. Then, if you know about ISA, talk about it. If don't, then talk about what you know. Various solar parks as example, हमको सब्सिडी मिल रही है. What is that doing? वो सब आप इसमें लिख सकते हो depending on what you have selected to write. Again, this is a topic जिसके बारे में I can write an essay of 1,000 to 2,000 words. But you just have 200-300 word limit. क्या करोगे? सिलेक्टिव. सिलेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कॉन्फिडेंटली फैक्ट के साथ एक्सप्लेन कर सको. एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल्स इज ऑल्सो ड्यू टू, देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ तक बताया, इसी में सेकेंड पॉइंट, लेकिन एम्फेसिस जो है इज ऑल्सो अबाउट समथिंग एल्स बिकॉज ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर पेरिस एग्रीमेंट. Expanding generation of renewable sources helps to lessen reliance on imported fuel. तो अगर आप टॉपिक्स को लाइक राइट नाउ आपका जो टॉपिक यहाँ पर है इट डजंट यूज द वर्ड इकोनॉमी और फाइनेंस, राइट? बट इफ इन दिस पेपर आप फाइनेंस से चीज़ों को कनेक्ट कर सको, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रेमेंडसली. ओके, so we are talking about that. It's also because under Paris Agreement, India's aspiration is to be a net zero emitter. Okay, so you can talk about renewable energy, how it is cost effective, how India, where the sources of renewable energy are readily available, we can optimize them. Okay, हम उसको leverage कैसे कर सकते हैं. You can talk about people are now getting aware about the protection of environment, and also they are also willingly looking. You can talk about how we have to import fuel, and of course it's getting really hard on common people to match the pricing and all for the daily use. So it's again going to benefit that way. Energy security के बारे में बात कर सकते हो. Okay, there are some more points. Let's see. Second part. Okay. The support for electric cars, biofuel, green hydrogen strategy also demonstrate. ये मेरे ऐसे का थर्ड पॉइंट है. आपके ऐसे का कोई दूसरा थर्ड पॉइंट हो सकता है. It could be better than what I have written. Just know it should be relevant. So the intent of nation to diversify energy mix. Still, the progress to a new world that is powered by renewable energy is not an easy road to take. अब देखो, because from this point onwards I wanted to write a challenge हर किसी टॉपिक में मिलेगा. So of course I started with the benefits and all. Now towards the end part of the main body of essay, देखो यहाँ पे हम कुछ challenges को बता रहे हैं कि it's not an easy road to take. Other challenges जैसे funding, interfacing, variability of the power, we need to meet all these needs. Infrastructure, promoting habit change, development of PPP is vital to surmounting these. हार्नेस कैसे करना है इतनी एनर्जी को, स्टोर कहाँ करना है ये एनर्जी को, कैसे करना है. द नॉलेज दैट वी हैव ऑफ फॉसल फ्यूल्स एंड रिलेटेड एनर्जी, ओके, नॉन रिन्यूएबल, versus the knowledge and technology we have to leverage renewable energy, it has difference because non-renewable we have been using for a very long time. तो बहुत प्रैक्टिकली आप सोचोगे, आप लोग सब इतने बड़े हो दैट यू कैन थिंक ऑल दीज थिंग्स. प्लस आप लोग अगर रीडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली इतना तो सोच ही सकते हो. आई एम वेरी श्योर. You have to put those thoughts into fine words, correct words. Short sentence होगा तो भी चलेगा, clarity बनी रहेगी, and that's how you frame an essay. Now come to the conclusion part. Okay, conclusion थोड़ा dramatic होना चाहिए. So renewable power in India presents both prospects and imperative in its future. टॉपिक क्या था देखो एक बार मेरे साथ. इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर, है ना? 4 words. इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर. नाउ कम टू दिस. दिस इज योर कंक्लूजन पार्ट. अच्छा, आपको ऐसे लिखना भी नहीं है. हाँ,
conclusion, and then you write conclusion. The word conclusion, main body आपके ऐसे में नहीं आएगा. So renewable power in India presents both prospects and imperative in its future. Future India renewable energy को renewable power. तो आपका topic in other words is reflected here. वही आपको आपके ऐसे में करना है. Okay. Strong policies. Now any kind of suggestion if you have, just say you want to end your this, any kind of hope, positive feedback आप यहाँ पर दे सकते हो. Conclusion has to be a part of your essay. Time run out कर रहा है, main body का 1 point you can leave, but 2 lines of conclusion are something that you have to include. So strong policies, investment, cooperation mean that for this country is well on course to becoming one of the leading producers in renewable energy, which will in turn help us fight against the climate change and improve growth. Okay, so थोड़ा lengthy statement है. I could do it. If you want to break it down, किसी भी तरीके से एक positive note पर आप end कर सकते. तो एक sample ऐसे था आप लोगों के लिए, and I hope that you might have noticed how it is designed, how it is framed, what are the things, and how I have included some points, how I have presented those points. So it's all about presenting. वो आपने अच्छे से कर लिया, trust me, you will get good score. Because you see, you never get full score. So we target usually for 60 plus, 60 to 70 if the paper is out of 75, if it is out of 100, किसी भी पेपर के लिए बात कर रही हो, then you target for 80 to 75 to 85, उस तरीके का मार्क्स हम सोचते हैं. अगर 100 का पेपर है तो 100 out of 100 कभी नहीं मिलता है in any descriptive. जनरल बता रही हूँ आपको. So you need to make sure that the best you can do, you do it, then you can get maybe 75 to 80% of your total marks, which we need. Not only you have to just write your descriptive writing for formality because it's a part, but you have to make sure you score well, of course. तभी तो फिर आप लोग आगे जाओगे दूसरों से, है ना? So in the session, in the course which we are starting, we have started actually. This was the first class, but also we wanted others who have still not enrolled in the course to take benefit of this. So this is on YouTube for that reason. तो आप लोगों को अब आना है classes में continuously. We will have live practice. That means first I will give you a topic which will be a surprise for you, just like in exam आपको surprise मिलता है topic का, पता थोड़ी ना होता. And इतने पास एग्जाम, so I know कि थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखा होगा अपने content, reading रोज कर ही रहे होगे. The topic will be given, time will be given to you to write that essay in the live class, and I'm going to check your essays in the live class itself. Okay. There are some rules, there is a way that we follow, a system we follow in our class. तो जब आप क्लास में आओगे तो आपको बता दिया जाएगा. Okay? Is there any question that you would like to ask about essay writing? So one last thing from my end, if there is something you can ask. In your personal timing, when you are practicing on your own, please make sure you use a timer. Okay? That means don't just type an essay, but please make sure you do it in 20 minutes, 30 minutes, whatever time you have decided. Secondly, you have to type and practice. Also when you are typing, अगर आप document word document में type कर रहे हो, spell check off कर दो. उसका spell check में ऐसे check लगा होता है box में, उसको uncheck करना होगा आपको, so that your spellings, if they are going wrong, you are not prompted. नहीं तो उसके नीचे red line आ जाती है ना ऐसी, वो prompt नहीं चाहिए हमको. Okay, that is the real kind of practice which you are doing. बाकी तो मेरी क्लास में मैं आपको हूँ सही करने के लिए, content wise, technicalities पे if you have to work, length पर if you have to work, maturity पे if you have to work, relevancy पे अगर काम करना है, I am there to guide you personally. बाकी हम वहाँ पे करेंगे. Okay. So that's it, I believe. No questions?
लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एनीवेज, इन केस आप लोग लेट आए हों, आपने अभी तक नहीं करा हो, आई वुड बी रियली हैप्पी इफ यू कुड लाइक एंड शेयर। ठीक है, सो डे बाय डे, एवरी डे जब भी क्लास होती है, हम हमारी क्लास में अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे एनपीएस के कोर्स के लेक्चर्स में। एंड the students look confident. So we'll see you later. Take care, all of you.